So this is the third part of our object-oriented programming lecture series, और स्पेशली इस पार्ट में अब हम देखें कि आप पाइथन में क्लास का सिंटैक्स यूज़ करते हुए क्लासेस कैसे बना सकते हैं और फिर उन क्लासेस से आप ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी योर स्टेपिंग स्टोन फॉर द ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो लेक्चर है, ये वाली वीडियो ख़ास तौर पे इसमें शुरू का सेगमेंट इज़ गोइंग टू बी ए समरी, जो कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में से करते आ रहे हैं, और ये वीडियो इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, सो आप कहीं भी किसी पोर्शन को भी स्किप कर जा सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Just to recap, object-oriented programming is essentially, what is that? That's a programming paradigm, yani a way of programming, way of organizing your code. Or the central point in object-oriented programming is the concept of objects. So objects क्या चीज़ें, इसमें हमने देखा था पिछली वीडियोस में। अगर आप चाहें तो यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच द encapsulation and abstraction videos, and I highly recommend you do that before moving on to this video. So object, they are like black boxes. I'm just quickly going to go through it because we have covered this in very great detail. So objects are black boxes. They have behaviors and they have unique identities, or they can interact with other objects. And this is what we saw in our abstraction video. You have to organize your program in such a way that it's basically a layer of abstractions, multiple layers of abstraction. इसका मतलब है कि आपने डेटा को अलग ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया और आपने फंक्शंस अलग से बना लिए जो कि इस डेटा को एक्सेस करते हैं, और आप देख रहे हैं कि उन फंक्शंस को जो कि इस डेटा को एक्सेस करते हैं, उसके अलावा आप किसी भी और फंक्शन को इजाज़त नहीं देते कि वो उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर दे। सो इसी तरह आप ये लेयर्स बनाते हैं, और अगर आपने एक लेयर को बाईपास करके दूसरी लेयर में जाके उससे एक्सेस किया तो देन यू हैव वायलेटेड एब्स्ट्रैक्शन एंड यू शुड नेवर डू दैट। लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते किसी को। लेकिन अगर आपने स्पेशली रोकना है तो दैट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, विच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग फिजिकल एक्सेस टू अ particular segment of your that black box that you made. All right, so this is what it basically looks like when you create an object using the constructs that you've already studied. So for example, we have studied functions. So this is a function जिसके अंदर we have multiple functions. These are called closure functions. इनके बारे में भी डिटेल हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं encapsulation वाली में. So basically closure functions जो हैं, they are used to they are special functions which remember its parent frame और उसके अंदर जो variables हैं. So for example देख रहे हैं यहाँ पे get x के अंदर there is no x variable available here. So where is x? It's inside the parent frame जहाँ पे वो create हुआ था. Anyways, you can pick any construct which can have a persistent state throughout the program, and then you can create an object out of it. So यहाँ पे basically what we have here is a bunch of functions, and we have a parent function in line number 1, and there is absolutely no way for anyone to get inside and access these functions, right? And then what we do is we return a dictionary. Basically, in simple words, this is just a public interface. We also saw this. Moving on, we create a function. We call this function. जब हम function call करते हैं, it creates an environment which creates this sort of a black box जिसके अंदर इसका अपना डेटा पड़ा हुआ है, right? अब जब आपने डेटा एक्सेस करना है तो this closure function has the access to its parent frame. It can directly go there and it can access. So similarly, also getx is a similar. getx does this in a similar way. Now, this thing here, return के अंदर, basically this is something called a public interface. Public interface is the set of functions जिसके ऊपर आप public को access देना चाह रहे हैं. So क्योंकि आपने सारे functions इसमें डाले हुए, तो इसलिए इसमें हर कोई फंक्शन पब्लिक एक्सेस कर सकती है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप getx यहाँ से निकाल देते हैं, कट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर now there is no way to access getx whatsoever.
So you have just restricted access to get X. So this is one of the examples of encapsulation in play, practically speaking. So now this is going to be an error. And we have created an object using the principles of object-oriented programming, even though हमने class का syntax को touch भी नहीं किया अभी. So that's why basically you need to know what abstraction and what encapsulation is and what's the difference between those and why are these so important in object-oriented programming. Okay, let's move on to our class syntax and how we create objects using the class syntax. So basically ये एक तरीका था objects को create करने का. अब हम देखेंगे दूसरा तरीका objects को create करने का, and that's the class syntax in Python. So Python में class बनाने के लिए आप क्या करते हैं? Okay, fine. What's a class? Let's talk about that. Class is basically a thing that you use to create objects. You can think of it like a blueprint. जब आप आर्किटेक्ट के पास आते हैं आपको ब्लूप्रिंट देता है. ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके पास घर भी है. तो आप क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट को लेते हैं और ब्लूप्रिंट के ऊपर जो नक्शा बना होता है उसके हिसाब से प्रिसाइसली फिर आप जाके घर बनाते हैं. दैट इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं यूजिंग द सेम ब्लूप्रिंट. अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी बनानी है और उसके अंदर आपने घर बेचने के लिए रखने हैं तो एक ब्लूप्रिंट एंड मल्टीपल होम्स. So in order to create a class, you have to first specify the class keyword, CLASS, and then class का जो भी नाम आपने रखना, point, student, employee, computer, whatever. And then you have to specify the colon, right? Okay, now how do you actually, अब इस class के अंदर क्या पड़ा हुआ है, we are not concerned. फिलहाल let's see कि इस class को use करके अगर आपने object बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे. For the time being, let's say हमारे अगर अपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो what we do is p1 any variable name equals to point. This is the name of the class. You type exactly like that, and then हम यहाँ पे parentheses डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ऊपर तो हमने कहीं parentheses नहीं डाली हुई. It looks like a function call in line number 15, but it's not. It's a very special syntax. So class का नाम और साथ में parentheses और साथ में इसके अंदर दो नंबर्स जा रहे हैं. और ये दो नंबर्स क्या हैं और किस तरह जा रहे हैं हम अभी देखते हैं. सो बेसिकली जैसे ही आप लाइन नंबर 15 देखते हैं तो होता क्या है कि अब जो पाइथन है उसने एक एम्प्टी बॉक्स क्रिएट कर दिया समवेयर इन द मेमोरी. सो दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी और दिस हैज सम एड्रेस और रेफरेंस और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. सो अब होगा क्या, अब आपको पता है ना कि जो ऑब्जेक्ट है हमने अभी तक देख चुके हैं काफ़ी सारे ज़्यादा ये कि हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं. अब पॉइंट के भी एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ कोर्स बिकॉज इज अ कंपाउंड डेटा टाइप एक्स एंड वाई. सो हाउ डू यू पुट द एट्रीब्यूट्स of the data in this empty box? So that's the question. And the solution here is there are a few ways actually, but the most convenient solution is to use the automatic constructor. So this is a special function जो कि क्लास के अंदर आप लिख रहे हो. सो क्लास के अंदर आपने फंक्शन डाला def __ init _ एंड देन पैरेंथेसिस और अब इसके अंदर तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं सेल्फ, एक्स और वाई. सेल्फ क्या चीज़ है, विल टॉक अबाउट दैट शॉर्टली. एक्स और वाई क्या चीज़ है, ये दो पैरामीटर्स थे जो कि आपने पॉइंट में भेजे हैं. इसमें आप अगर आपने ज़्यादा पैरामीटर्स भेजने हैं तो यू कैन कोमा सेपरेटेड पैरामीटर्स आपकी लिस्ट पूरी दे सकते हैं, एक्स वाई जी वट जितने भी आपने डालने हैं. यहाँ पे भी सेल्फ को इग्नोर करके बाकी आप यहाँ पे डाल देंगे एक्स वाई जी एम एन ओ पी जितने भी आपने डालने हैं वेरिएबल्स पैरामीटर्स. सो सेल्फ जो है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फर्स्ट पैरामीटर इन एनी मेथड ऑफ अ क्लास. अगेन अगर आपको फंक्शन क्लास के अंदर डालेंगे तो दैट्स गोइंग टू बिकम अ मेथड. यू विल कॉल दैट एज अ मेथड. Now, what is this self? So basically this self is the object that you have just created. और वो इसका as a parameter pass हो रहा है. Now what you're doing here is you're accessing the attribute called x from this black box called self. और इसके अंदर आप जाके देखेंगे you're going to try to find it, the x, value of x. अब यहाँ पे x पड़ा नहीं हुआ, it's empty. So what you do is
अब आपको पता है ना कि जब आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू, वो नया वेरिएबल क्रिएट होगा और फिर उसकी वैल्यू अपडेट होगी। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट का मतलब है कि यू आर गोइंग टू दिस बॉक्स जो कि अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है, और उसके अंदर देन you need to find this variable. If you don't find, create a new one and assign this value. If you find, then just reassign the value, right? After it's created, then you basically bind the name p1 to this black box, और फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। Now जब भी आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है या रेफर करना है, तो then all you have to do is you have to do it through p1. And you will use this dot notation. So this is basically what we have here, a bunch of functions. This is called the public interface, meaning that the user is going to use these methods actually to access the internal details, these attributes of this object. So आप देख रहे हैं कि हर method में the first parameter is always self, और ये self क्या चीज़ है? That's the reference of the black box जिसके अंदर से आप डिटेल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो कई लैंग्वेजेस हैं जिसमें यू डोंट हैव टू गिव सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली पास होता है। इन द पैरामीटर पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली तो पास होता है, बट यू हैव टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पैरामीटर एज सेल्फ ऑलवेज। आपके फंक्शन में कोई पैरामीटर हो या ना हो, पहला पैरामीटर सेल्फ जरूर होगा। ओके, सो दैट्स द self, and then what we have here is we do p1 dot print. अगर आपने इस क्लास का मेथड रन करना है, एक्सेस करना है, तो what you do is you do it through the dot notation here. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि you do p1 dot print, और print के अंदर आप देख रहे हैं कि there is no basically parameters here, absolutely not. So the syntax is object dot the attribute या method, in this case this is method. अब होता क्या है कि जो पाइथन है वो p1 को पकड़ेगा और ऑटोमेटिकली इसके अंदर भेज देगा एज द फर्स्ट पैरामीटर। आपको भेजने की जरूरत नहीं है, यू विल कीप दैट एज एम्प्टी। सो व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड, योर सेल्फ विल बिकम p1. बेसिकली योर सेल्फ विल ऑलवेज बी द ऑब्जेक्ट which invokes this method. Always remember that. So you go to the p1 black box, and then you can access the attributes just like before, right? So yeah, so this is the and basically now the big idea is that the init method is invoked automatically when the object is created. इसकी अगर हम छोटी सी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें कि what's happening over here is just to, so for example हम एक random class बनाते हैं, class point, and we quickly write the init function self x and y, and then what we do is, अब देखें अगर आप यहाँ पे करेंगे x equals to, जैसे हम अगर नाम चेंज कर लें a और b for the sake of this example, a और y equals to b करेंगे, और फिर आप इस कोड को रन करेंगे तो फिर क्या होगा? लेट्स गेट बैक टू द फिगर। सो फिर होगा ये कि जब आपने एम्प्टी बॉक्स बनाया हुआ है, व्हेन यू आर डूइंग दिस, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब आप करते हैं x equals to a, दिस इज गोइंग टू बी द लोकल वेरिएबल फॉर दिस फंक्शन. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप उसके साथ सेल्फ लगाएंगे. यू हैव टू गो टू द सेल्फ ब्लैक बॉक्स एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एट्रीब्यूट. सो अगर आप खाली यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, x का नाम लिखते हैं, दैट्स जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू लोकल वेरिएबल इन दिस फ्रेम. उसकी वैल्यू साइन होगी और फिर फ्रेम खत्म हो जाएगा और आपका जो बॉक्स है वो एम्प्टी का एम्प्टी ही रहेगा. बी वेरी केयरफुल. सो इसका सोल्यूशन क्या, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गो टू द बॉक्स देयर सेल्फ. अब यहाँ मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं. सो जो बॉक्स जिसके ऊपर वो मेथड कॉल हो रहा है दैट्स ऑटोमेटिकली बी सेल्फ. तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. एंड देन सेल्फ डॉट वाई, और यहाँ पे देन इट विल क्रिएट एक्स एंड वाई विद द वैल्यूज ए एंड बी, राइट. एंड यहाँ पे हम प्रिंट भी मैसेज कर लेते हैं. लेट्स से I am in init
and then what we do is we simply create a object equals to 0.12. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सेल्फ पास नहीं किया, हमने सिर्फ 2 पैरामीटर पास किए. सो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा विद द पैरामीटर्स दैट यू हैव पास्ड. और तीसरा पैरामीटर इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड इन द मेमोरी एंड देन इट्स रिटर्न टू p1. ओके, अब आप देखें कि जब हम इसको रन करते हैं तो इट सेज आई एम इन इनिट, मीनिंग कि दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली. और अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल प्रिंट p1 डॉट y, सो अगर आपने कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो यू हैव टू यूज द डॉट नोटेशन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स गोइंग टू प्रिंट 2. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी पास्ड हियर, राइट? Alright, so another very big idea is that self is the parameter. The self parameter is the object which invokes basically the method using the dot operator. So यहाँ पे again क्योंकि आपने p1 is the object which invokes your method, so self is going to become p1. So let's take a look at another example. इसमें exactly same class है with lesser methods, but इसमें हम multiple objects बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं. Again, we create an object. This is the syntax that we use. अब यहाँ पे जो पैरामीटर होंगे इसमें आप कितनी वैल्यूज दोगे? जितनी वैल्यूज init कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं उससे एक कम. ऑफ कोर्स आप सेल्फ नहीं देंगे, that's why कम. अब यहाँ पे क्या होगा? It's going to create an empty box. Then it's going to initialize then it's going to call the constructor automatically, और उसके अंदर it's going to initialize the attributes for this object. Or now this object is assigned basically to p1. Now your p1 is bound to this black box somewhere in the memory. When you do print p1.x, तब क्या होगा? You go to the box that's called p1. You look there for the attribute x. वहाँ पे if it's found, you return the value. So यहाँ पे it's going to print 1. Otherwise, if it's not found, then you simply print an error. Okay, now what's happening here is you're changing the value. It's 1 here. Now you're changing the value when you put the name of the attribute using the dot notation towards the left side of the assignment statement. Then this is going to become an L value statement, which means it's going to change the value. So at this point, you create another object. And this is again going to be initialized empty. और जैसे ये create होगा वैसे ही automatically init call हो जाएगा और इसका जो reference है वो self के अंदर पास हो जाएगा. So now you can create variables, attributes basically in this box, and this is exactly what's happening here, right? और फिर इसका जो box का reference है वो आपके p2 के साथ bind हो गया जाके. Okay, fine. Now watch very closely. Here we're printing whatever the p2.getX returns basically. लेकिन p2.getX है क्या? अब आप देख रहे हैं कि p2 is an object which is invoked its method called getX using the dot notation. इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई पैरामीटर नहीं जा रहा, even though कि यहाँ पे self जा रहा है. अब हो क्या रहा है? The object that invokes getX is p2, right? And this will be passed as the self automatically by the Python. और आप देख रहे हैं कि the self will become p2. So when you go to the p2 box and you do self.x, so self, since it is p2, the p2.x is going to be 4, and that's going to be printed on the screen, right? It's going to go there. Okay, now when we do p1.getX, अब आप देख रहे हैं कि getX is the same function जो कि पहले कॉल हुआ था. इसके अंदर फर्क क्या है? The object that calls it. So अगर आप गौर से देखें तो ये जो मेथड्स हैं ये इनकी सिर्फ एक कॉपी पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर. मल्टीपल कॉपीज हर ऑब्जेक्ट के लिए मेथड्स की नहीं बनती. लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की कॉपीज पड़ी हुई हैं जो कि हर किसी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट है. सो डेटा आपका हर किसी ऑब्जेक्ट का अपना है,
लेकिन जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, 10,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मेथड्स शेयर कर रहे हैं. सो आपने अभी देखा कि लाइन नंबर 13 में पहले P2 ने getX कॉल किया, फिर P1 ने getX कॉल किया. इसका मतलब है कि getX मेथड इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. लेकिन getX बेचारे को क्या पता कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, किस ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेके रिटर्न करनी है, उसको किस तरह चला है. एंड द रीजन इज, एंड द आंसर इज थ्रू द सेल्फ. बेसिकली पहले getX में वो ऑब्जेक्ट पास हुआ था जिसने उसको कॉल किया था, बाद में getX में वो ऑब्जेक्ट पास हुआ P1 जिसने बाद में उसको कॉल किया. सो दैट्स हाउ इट नोज कि व्हाट टू रिटर्न, और इट रिटर्न्स डिफरेंट वैल्यूज, द सेम फंक्शन रिटर्निंग डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन क्या आप उसके पैरामीटर में क्या दे रहे हैं. और पैरामीटर में सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट जाएगा जो कि उसको कॉल कर रहा होता है. फाइन. सो दिस इज गोइंग टू गो टू द P1 बॉक्स सिंस P1 इज बीइंग पास्ड एज एन the first value automatically which is going to become the self. और फिर आप जाते हो P1 बॉक्स पे और देखते हो उसके अंदर x क्या है, and then you return that. So that's how it works basically. Yeah, we talked about this कि you have a single copy of the methods, multiple copies of the objects, or all objects, they share these methods. And how do they do that? They pass themselves as the self parameter. So पहले P1 पास करेगा तो फिर the object, the function method is going to operate on P1 and so on, right? And that's the big idea. The methods are created only once, and different objects share the same methods by passing themselves as self. So you try this. Yeah, let's say you have a rectangle class. इसको हम try करते हैं. You have a rectangle class with the attributes length and width. और आपने क्या करना है, आपने पहले एट्रीब्यूट क्लास बनानी है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं लेंथ एंड विड्थ, एंड देन यू हैव टू क्रिएट मेथड्स टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर, एंड देन क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स. सो दैट्स व्हाट यू डू. So you do this, and I'll like pause the video, and then I'll be back in 3 seconds. 3, 2, 1, and let's create the class here. So what we do is class rectangle colon. अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स जा रहे हैं वो हैं लेंथ और विड्थ. So आपने इसको इस तरह सोचना है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट? एंड द कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी, let me just quickly rearrange this. So the constructor is going to be def underscore underscore init underscore underscore, and then हमेशा हर मेथड का जो पहला पैरामीटर है दैट्स गोइंग टू बी सेल्फ. क्या हम इसमें पैरामीटर्स दूसरे पास करेंगे? लेंथ, लाइक जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अभी लेट्स जंप अहेड. रेक्टेंगल 1 इक्वल्स टू, हाउ डू यू क्रिएट अ रेक्टेंगल. इसके अंदर डू यू वांट टू पास समथिंग? अगर नहीं तो ठीक है, आप बाद में सेट कर लें, बट here I would pass length, width and length for example. So दो values. जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसमें आप 3 चीजें डालेंगे, because the first one will be automatic. So width, इसको W से रिप्रेजेंट कर लें, ये width पूरा लिख लें, and then length colon, ये हमारा मेथड बन गया. इसके अंदर how do we put, basically this thing is going to create an empty box as we saw earlier. अब उस एम्प्टी बॉक्स में आपने एट्रीब्यूट्स किस तरह इनिशियलाइज करने हैं, यूजिंग दिस सेल्फ सिंटैक्स, सेल्फ डॉट विड्थ. जो नाम देंगे वही जाके वो एम्प्टी बॉक्स में इनिशियलाइज कर देगा विड्थ. सो दिस विड्थ इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ. दिस विड्थ इज नॉट पार्ट ऑफ सेल्फ. दिस विड्थ इज जस्ट कमिंग डाउन एज अ पैरामीटर. सो जब आप डॉट नोटेशन यूज करते हैं, सम ऑब्जेक्ट डॉट सम एट्रीब्यूट, you have to treat this entire thing as one variable combined, that जोड़ा हुआ एक complete variable के तौर पे आप इसको treat करेंगे फिर, right? So this width is different from that one. That's what I'm trying to say. This width is not individual now. This is an entire new variable basically. So self dot height equals to height, right? ये हमारा constructor बन गया. Now what we have to do is we have to calculate the area and parameter. उसके लिए methods आपने बनाने हैं. def area calculate करने के लिए again हर
चाहे जो मर्जी फंक्शन हो जाए उसमें पहला पैरामीटर इज गोइंग टू बी सेल्फ, वो तो आपने आंखें बंद करके लिखना है। उसके अंदर हमने कुछ देने की जरूरत है दो, तो फिर एरिया कैलकुलेट कहां से होगा, राइट? अगर आप करते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट r1 डॉट एरिया, इट्स अ फंक्शन कॉल। अब यहां पे एरिया जो है किसका कैलकुलेट होगा, r1 का, और r1 यहां पे एरिया में कहां से आ रहा है, थ्रू सेल्फ, जिस तरह कि हमने पिछली स्लाइड में देखा अभी। तो फिर हम यहां पे हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, बेसिकली रिटर्न self dot width multiplied by self dot height। रिमेंबर यहाँ पे आपसे सेल्फ लिखना है, अगर आपने सेल्फ भूल गए तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यू आर नॉट गोइंग टू द बॉक्स एनी मोर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द लोकल वेरिएबल्स, जो कि यहाँ पे नहीं है तो एरर देगा आपको। अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे इट्स गोइंग टू बी लोकल वेरिएबल्स, अगर आप सेल्फ लिखेंगे देन यू आर प्रॉपरली गोइंग टू द बॉक्स जो कि इस फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, वो वाला ऑब्जेक्ट, और फिर देन इट्स गोइंग टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम देयर। Okay, now what? Now we have the parameter. Let's check it out, वैसे ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। Okay, कह रहा है height is not defined. Self dot width. Oh, we don't have height, basically width और length है, तो इसको हम quickly length में change कर लेते हैं। So now let's run. अब देख रहे हैं कि the area is 15. And let's quickly create the parameter function, method. Parameter method, again the first parameter is always going to be self, no matter what. And then return, it's also pretty simple, just width ka twice or height ka twice, length ka twice, or you just add these two numbers then. So you multiply this with 2 and you multiply this with 2 and you get your parameter. And this is how basically very simply you create objects using the class syntax in Python. So the parameter is 16. अगर इसको हम चेंज कर दें फॉर एग्जांपल 10 और 15 करके देखें तो it's going to give you dramatically different results for both. All right. So this was it, and a brief introduction of how to create objects using the class syntax. So see you in the next segment.